नमस्कार जय जगन्नाथ वेलकम करुच्चे आपन को कैक्स आईएएस को तो जेन जानि छन आपण जून 7 रे ओपीएससी तार प्रीलिम कंडक्ट करिवो तो सेति में हम अनाउंसमेंट भी करितले कि प्रतिदिन 10टा बेले प्रस्तुति बैच रो रिवीजन थ्रू एमसीक्यू हमें करैबा विथ डिफरेंट कांसेप्ट टाइप रो आसी परिवो विथ क्वेश्चन को हमें पोस्टमार्टम भी करिबा कि प्रॉपर को वे रे क्वेश्चन को एनालिसिस करा जाई परिवो तो हमें ताको आज देखिबा। तो आज देखिए ए प्रस्तुति सीरीज रो जदि देखिबा रिवीजन थ्रू एमसीक्यू तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें जीवा। फर्स्ट क्वेश्चन कोन देइछि फर्स्ट क्वेश्चन ता पूर्व भी आपण जदि देखिबे शेड्यूल प्रतिदिन 10टा बेले रहउछि आपण कहितली 10टा बेले मंडे रहउछि इकोनॉमिक्स ट्यूसडे ज्योग्राफी वेडनेसडे पॉलिटी गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी रो क्वेश्चन रहइबो 25 क्वेश्चन थर्सडे काली एनवायरनमेंट फ्राइडे हिस्ट्री एंड सैटरडे एंड सीसैट। तो यही प्रोसेस रे हम कौन हम कि प्रतिदिन 10टा बेले आम लाइव आसबू आपणकर क्वेश्चन को सॉल्व करूँ एट द सेम टाइम आम डिफरेंट कॉन्सेप्ट को भी कौन करवा एनालिसिस। ओके तो जदि आर पीडीएफ चाहूँ तो डेफिनेटली आप टैक्स आईएएस टेलीग्राम चैनल रे जॉइन करेंगे आपको डेली अपडेटेड मिल जाए क्लास रे लिंक भी मिल जाए। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखा कौन दे फर्स्ट क्वेश्चन कौन दे कि विथ रेफरेंस टू फर्स्ट क्वेश्चन देजी with reference to article 32 of Indian Constitution which of the following statement correct। okay article 32 आपण जानि छन article 32 is the constitutional remedy is given under fundamental right जोटा को हार्ट एंड साउल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर अंबेडकर भी कहितले हार्ट एंड साउल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके इवन इफ इट इज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केसेस रे भी डिफरेंट केसेस रे भी सुप्रीम कोर्ट कहि कि देयर आर्टिकल 32 इज आल्सो अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके तो आर्टिकल 32 कौन कहूँ if any fundamental right you're violated you can approach to the supreme court for the remedies। ओके आपण सुप्रीम कोर्ट पाखु आपण जाई परिबे कोठी ना रिमेडी पई आर्टिकल 32 रे आपण जाई परिबे। केवल 226 रे आपण कोठी कि ना कोनोसी फंडामेंटल राइट हो ऑर्डिनरी कोनोसी राइट वायलेशन हो you can approach to what approach to the high court। बट मन रखिबे आर्टिकल 32 इट्स एक्सक्लूसिव नुह फंडामेंटल राइट जदि वायलेशन होउची ताहाले आर्टिकल 32 एक्सक्लूसिव नुह ओरिजिनल है पारे बट इट इज नॉट एक्सक्लूसिव because it is concurrent काहे हाई कोर्ट पाखरे भी अछि। तो देखिबा क्वेश्चन कोन देछि with reference to article 32 of Indian Constitution consider the following statement कोन देछि it involves the doctrine of the constitutionality of executive order or legislation if it directly infringes any of the fundamental right। तो फर्स्ट दीटा कांसेप्ट देछि कि executive order आउ लेजिस्लेशन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर लेजिस्लेशन माने को तमे माने जानिचो व्हाट डू मीन बाय राइट्स मींस इट्स अ क्लेम। ओके जनरली क्लेम काहे अगेंस्ट रे करिवो ना स्टेट अगेंस्ट रे जदि कोनोसी सिटीजन रो फंडामेंटल राइट वायलेशन हो तो राइट्स वायलेशन होची दैट मींस क्लेम करिवो काहे अगेंस्ट रे ना तमे स्टेट अगेंस्ट रे करिवो आ स्टेट रो डेफिनेशन केतना नंबर आर्टिकल देछि आर्टिकल 12 रे देछि। ओके स्टेट रो चारिटा एलिमेंट थाई ओके पॉपुलेशन टेरिटोरी गवर्नमेंट एंड सॉवरेनिटी आई जिनस गुडा कहार अच्छी ना लेजिस्लेचर रो अच्छी एग्जीक्यूटिव रो अच्छी माने कोन कहला इट इज कोन कहूची इनडायरेक्टली स्टेट रो कथा माने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर और लेजिस्लेचर आ सीए तमर फंडामेंटल राइट वायलेशन करूची यू कैन अप्रोच टू द सुप्रीम कोर्ट केतना नंबर आर्टिकल 32 रे माने को फर्स्ट स्टेटमेंट आपण कोन देला ना फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट अछि फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट अछि जदि आर्टिकल तमर फंडामेंटल राइट वायलेशन होची यू कैन अप्रोच टू द सुप्रीम कोर्ट। सेकंड the Supreme Court has original and exclusive jurisdiction in case of the enforcement of the fundamental right। okay original माने कौन original माने होचे to hear the cases in first instance suppose तमर फंडामेंटल राइट वायलेशन होला यू कैन डायरेक्टली अप्रोच टू सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट फर्स्ट इंस्टेंस रे तुमको कोन ना जजमेंट और तमर कोन रीट पिटिशन दबो और तुम कहि परिबो कि रीट्स प्रोवाइड करियो मना करि परिबो नाही बिकॉज़ ओरिजिनल बट तुम हाई कोर्ट गला हाई कोर्ट में भी मना कर दे पारे। राइट टू गेट कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 itself is a fundamental right but from 2 to 6 from court to high court it's not a fundamental right। तो सुप्रीम कोर्ट केबे भी डिनाई करिवने हाई कोर्ट में भी डिनाई करि पारे बट सुप्रीम कोर्ट केबे भी डिनाई करि पारे दैट इज व्हाई इट इज ओरिजिनल बट एक्सक्लूसिव नुह एक्सक्लूसिव हेतिले ओनली सुप्रीम कोर्ट ही देई पारता ना हाई कोर्ट नै ना तो सुप्रीम कोर्ट ही देई परिबो
हाई कोर्ट भी अच्छी 226 रे तो एटा एक्सक्लूसिव नुह कनकरेंस एटा कनकरेंस तो सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट the third statement देला को it is the basic feature of the constitution and cannot be taken away by the constitutional amendment ओके तो आपण जानिले कि मु आगुर कहली कि जे बेसिक स्ट्रक्चर और तब कहि परिबो बेसिक फीचर को केस रे आसीतला आपण कहि परिबो केशवानंद भारती केस केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 डेट भी मन रखंतु अप्रैल 24 1973 even if L Chandra Kumar case 1997 L Chandra Kumar case रे सुप्रीम कोर्ट कहले कि the basic structure article 32 is a basic judicial review is a basic structure of Indian constitution. The third statement is correct because it is a part of the basic structure of Indian constitution so that parliament cannot take away तो parliament ताको amend करि परिबो नाही तो एथरा हम स्टेटमेंट कोन ठीक हैला 1 and 3 कोथरे ऑप्शन अछि तो डेफिनेटली ऑप्शन सी रे अछि तो सी विल बी द करेक्ट आंसर आई थिंक ए पर्यंत समस्त क्लियर थिवो ए क्वेश्चन क्लियर थिवो सी विल बी द करेक्ट आंसर ओके डन आगु जिबा एथरा म आपण मानु टाइम देबी ओके 2 नंबर क्वेश्चन टाइम देबी आपण मन आंसर करिवे देन आगु जिबा 2 नंबर क्वेश्चन अछि which of the following is the contribution of Indian Council Act of 1860 Indian Council Act of 1861 रो Indian Council Act रो कोन कंट्रीब्यूशन थिला ओके एटा एनेक्टेड हैतला आफ्टर 1857 1857 युद्ध परे ओके रिवोल्ट 1857 पर 1858 रे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आसला देन 1861 ने काउंसिल एक्ट आसला तो काउंसिल एक्ट जनरली फीचर्स ऊपर एटा जनरल तमे देखो बहुत सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो प्रीवियस ईयर रे पचारितला बाइकैमरलिज्म कोड आसला डायर के सिस्टम कोड आसीतला को एक्ट आसला 1909 1935 बहुत सारा क्वेश्चन आसी तो डेफिनेटली एक्ट उपर क्वेश्चन आसी परिबो रेगुलेटिंग एक्ट भी क्वेश्चन आसी परिबो पिट्स ऑफ इंडिया एक्ट भी क्वेश्चन आसी परिबो डिफरेंट काउंसिल्स एक्ट चार्टर एक्ट अछि तापर भी क्वेश्चन आसी परिबो तो डेफिनेटली ए एक्ट को भलसे पड़ी जिवो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया और द कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया तमर कॉन्स्टिट्यूशन को केमे डेवलप करा जायतिला जोटा तम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कहू सो कॉल्ड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ओके एटा कॉन्स्टिट्यूशन को केमे डेवलप करा जायतिला अप टू कैबिनेट मिशन 1947 पर्यंत भी आपण को करि परिबे इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट भलसे पढ़ी कि जिवे सो दैट तापर क्वेश्चन आसी पारे तो अटेंड करन दे क्वेश्चन कोन दैछे 18 ना ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर दिया जायतिला ओके ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर दिया जायतिला कहा को ना गवर्नर जनरल को ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर दिया जायतिला कोथरे ना 1861 मसिया रे ओके एक्ट दिया जायतिला इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 रे तमु दिया जायतिला कोन ना गवर्नर आर लाइफ स्पान केते तिला लाइफ स्पान तिला 6 months बट एबे जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर आर्टिकल 2123 एंड 213 रे दिया जायछि ओके सेटा को उत्तर सेटर को अछि ना 6 weeks एंड मैक्सिमम लाइफ ऑफ एन ऑर्डिनेंस केते अछि 6 months 6 weeks तो एटा देखंतु ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर दियतला पोर्टफोलियो सिस्टम भी इंट्रोड्यूस हेतला किन बाइकैमरलिज्म इन पार्लियामेंट नथिला बाइकैमरलिज्म दीटा कांसेप्ट मन रखिए बाइकैमरलिज्म एट सेंटर 1919 ओके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 नेक्स्ट बाइकैमरलिज्म एट प्रोविंस 1935 ओके डायर की सिस्टम उल्टे दबो डायर की सिस्टम हे जिवो ओके तो सही वाला दिन बाइकैमरलिज्म डायर के टाइप रा क्वेश्चन आसुची तो थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट से पचारे जे करेक्ट कोटा तो 1 and 2 को उतरे अछि तो आंसर योर विल बी बी ओके 2 नंबर क्वेश्चन आंसर विल बी बी नेक्स्ट एथर तम एक्सप्लेनेशन देछि कोन 19 ईयर एक्टर को आस्तिला इट मेड द बिगिनिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन तापर को 22 नो नॉमिनेटेड सम कोन नॉन ऑफिशियल्स इंडियंस को भी ए करितले के थिले राजा ऑफ बनारस महाराजा पटियाला एंड सार दिनकर राव देन
एस्टाब्लिशमेंट ऑफ न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल बेंगल नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस रे इतला लेजिस्लेटिव पावर रो बॉम्बे मद्रास रो रिटर्न करा जाइतला जो कोन करा जाइतला सब्जुगेट करा जाइतला कलकत्ता प्रोविंस रु तो ताकू भी कोन करा जाइतला रिस्टोर करा जाइतला तापर पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस होइतला ऑर्डिनेंस मेकिंग का को वाइस रे गवर्नर जनरल को दियाइतला ड्यूरिंग इमरजेंसी आ तार लाइफ स्पैन केते तिला ना केते तिला 6 मंथ ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा 3 नंबर क्वेश्चन आंसर को हबो 3 नंबर क्वेश्चन आंसर को हबो 3 नंबर क्वेश्चन आंसर को हबो कोंदु which of the following is are envisaged as the right against exploitation right against exploitation right against exploitation right against exploitation 23 रु 24 आर्टिकल भीतर देछि 23 रु 24 आर्टिकल right against exploitation then protection against arrest and detention article 22 तो हमार चांस नहीं protection against arrest and detention article 22 रे प्रोवाइड करा देछि okay next prohibition of employment in children factories up to 14 years okay all ban कौन सी फैक्ट्री हो कि कौन सी नो देयर इज नो चाइल्ड लेबर कौन से ऑर्गेनाइजेशन काम करि परिबेन बट 14 to 18 adolescents ban on only hazardous industry only ban करा दैछि ओके prohibition of employment article 24 prohibition of traffic of human beings and forced labor article 23 article 24 and article 23 okay तो एथर पचारछि कोन ना सेकंड एंड थर्ड इज करेक्ट पचारछि कोटा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन अछि सी विल बी द करेक्ट आंसर 3 नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर ओके नेक्स्ट ओके प्रियम्बल ऊपर क्वेश्चन अछि करंतु with reference to the preamble is the opening page to the constitution को आजे preamble is the identity card of the constitution एने पालके और नानी पालके वाला कहले it is the identity card of the constitution एटा कहले कि preamble is the horoscope to our sovereign democratic republic मुंशी साहब कहले कि it is horoscope to our sovereign democratic republic okay preamble is the torch bearer through preamble you can see the constitution preamble is the essence of the constitution बहुत सारा थिंकर्स बहुत सारा कथा कहछन preamble ऊपर ओके तो preamble को यदि हम देखिबा with the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic and secure its citizens of justice liberty equality and fraternity justice social justice economic justice and political justice liberty of thought expression belief faith and worship ओके इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन एंड स्टेटस तो ये कांसेप्ट गुडा तुम सब देछि कोथरे ना प्रियम्बल तो देखन कोन कहछि जे प्रियम्बल कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट कोन देछि जे इट इज नॉट ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल इज ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मन रखिबा बेरुबारी यूनियन केस बेरुबारी यूनियन केस 1960 preamble is not a part of constitution okay supreme court said preamble is not a part of the constitution it is only light through which the constitution can be interpreted so term बेले जते बेले हमें confusion होउचे you can interpret through the preamble जेमति कि बहुत सारा doctrine अछि तमे constitution को interpret करछो जेमति doctrine of pith and substances doctrine of colorable legislation doctrine of territorial nexus doctrine of severability doctrine of constructive constructive harmonious construction okay doctrine of reasonableness बहुत सारा doctrine अछि through which you can interpret the constitution तो सही बड़ा preamble is also part so that you can see the constitution okay it is the torch bearer जो तरह के हम interpret करि परिबे it is not a part of the constitution okay से कहले कि preamble is added after the constitution has been made constituent assembly तो यही सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 137 ने देछि कि सुप्रीम कोर्ट कैन इट्स रिव्यू इट्स ओन जजमेंट चेंज भी करि परिबो नो डाउट रिव्यू इट्स ओन जजमेंट आर्टिकल 137 यूज करिके इन केशवानंद भारती केस 1973 प्रियम्बल कहले के सॉरी सुप्रीम कोर्ट कहले इट इज ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गेम बाबू ओके देखिबा आंसर कोन होचे प्रियम्बल इज ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहले and in LIC of India case 1995 it is कहले कोन जे integral part of the constitution preamble is an integral part of the constitution
तो पचारिछि नॉट पार्ट कहिछि तो रॉन्ग स्टेटमेंट इट कैन नॉट बी अमेंडेड ओके इट कैन नॉट बी अमेंडेड कहिछि ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट बिकॉज 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 preamble is amended and 3 term is added ओके कोन सोशलिस्ट सेकुलर and integrity that is wrong the answer will be D neither one not two very good okay like କରିଦେବେ ଟିକେ ଲାଇକ୍ ବି କରିଦେବେ ଯଦି କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ନୂଆ ନୂଆ ମିଳିବ ଆଉ ଯଦି କିଛି क्वेश्चन प्रैक्टिस हबो तो डेफिनेटली आपण लाइक करिवे सेशन ओके नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग element form a part of the basic structure of constitution as laid down by various court judgments मन रख originally there is no term like basic structure of constitution कोनोसी basic structure originally term ही नथिला constitution इन OPSC आंसर देछि कि originally constitution रे define है जे term अनुसार basic structure I think 2022 रे OPSC has made blunder question भी देइतला कि जे basic structure has been defined by the constitution like this wrong statement OPSC देइछि आंसर ओके किछ कहि होबन OPSC नमस्कार जो टिके ओके तो ओपीएससी आंसर देइतला सेते बेले तो ऑब्जेक्शन वाला नथिला तो लास्ट मोमेंट रे जो माने गोटे मार्क रे हाफ मार्क रे कटिथिबे से माने फील करि पड़थि वर्षरा ओके तो बहुत सारा नॉट वैल्यूड हे जाउची फिर भी चलो ठीक अछि यू हैव टू एक्सेप्ट द सिस्टम बिकॉज़ यू कैन डू एनीथिंग ओके देयर इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स फॉर्म अ बेसिक पार्ट स्ट्रक्चर ऑफ द पार्ट मन रखे बेसिक और फर्स्ट टाइम पाई सुप्रीम कोर्ट इन केशवानंद भारती केस रे कहले देयर इज अ बेसिक स्ट्रक्चर सो दैट पार्लियामेंट कैन डू एनीथिंग ओके पार्लियामेंट किछि भी कर दो but cannot amend the column the basic structure of constitution okay तो कौन हबो फर्स्ट secular character of the constitution it is a part of the basic structure of Indian constitution separation of power between legislature and executive it is a part of the constitution principle of reasonableness it is a part of the basic structure but socialist state कथा कहनी socialist state कथा कहनी तो 1 to 4 तो definitely 1 to 4 3 सोशलिस्ट कथा कौन से केस रे भी कहनी मन रखियो सोशलिस्ट कथा कौन से केस रे कहनी कि जे सुप्रीम कोर्ट जे इट इज ए पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो डेफिनेटली एटा रॉन्ग हबो तो 1 2 4 कोथरे अछि भाई तो क्वेश्चन नंबर 5 विल बी डेफिनेटली डी 1 2 3 हबोनी 3 केमिति हबो सोशलिस्ट रे कथा ही कहनी सेकुलरिज्म कथा कहिछि कोन कहिछि रूल ऑफ लॉ ही परिबो okay separation of power secular article 32 itself बुझौछि separation of power these are given तो answer of 1 to 4 so definitely 1 to 4 will be the correct answer next question why the rights guaranteed under part 3 of the constitution are called fundamental rights काहे कि याकु तमे fundamental right कहू त मानु कहितली प्रिंसिपल ऑफ रिजनेबलनेस जेमति कि कंस्ट्रक्टिव कोन कंस्ट्रक्ट हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन रिजनेबलनेस तमे देखिबो कि जे एक्चुअली करेक्ट कोन अछि रिजनेबली हम यूज करि पारुचो ना नाही दैट इज द रिजनेबलनेस फिजिबल होउची ना नाही ओके ए डॉक्ट्रिन पार्ट रे मु तमु कहि देबी नेक्स्ट ईयर में तुम डॉक्ट्रिन पार्ट गोटे 9टा पीएम रे क्लास होउची जेतर मु तुम डॉक्ट्रिन पार्ट आणुची डॉक्ट्रिन रो 2-3टा डॉक्ट्रिन ऑलरेडी सारी छे तो सेतर कनेक्टेड रहबे कि मु डॉक्ट्रिन सब गुडा सारी देबी ओके अराउंड 20 to 25 डॉक्ट्रिन अछि मु तुम 3-4टा क्लास रे सारी देबी 2टा डॉक्ट्रिन पढैछि तो डेफिनेटली आउ जो डॉक्ट्रिन गुडा अछि मु तब सारी देबी डोंट वरी ओके डोंट वरी सब सारी देबी सेतर एबे कोंतु जो फंडामेंटल राइट्स को हम फंडामेंटल काई कहउछ फंडामेंटल राइट्स को हम काहे कि ए राइट्स को फंडामेंटल देयर आर सो मेनी राइट्स फंडामेंटल राइट्स ह्यूमन राइट्स कॉन्स्टिट्यूशनल राइट लीगल राइट बहुत सारा राइट अछि बट आको हम फंडामेंटल राइट काहे कहले फंडामेंटल कहिबार बहुत सारा कारण अछि फर्स्ट कॉज होला फंडामेंटल माने कोन फंडामेंटल तमे फिजिक्स रे पढिथिबो फंडामेंटल काहे कि कुआ जाय बिकॉज़ ता थारु आउ सब डिराइव हेइ छथि ओके हमें को द फंडामेंटल यूनिट्स ए मास लेंथ टाइम इज द फंडामेंटल यूनिट्स काहे कि ना मास लेंथ टाइम रु आमे सबु डायमेंशन बाहर करि पाउछे सबु डायमेंशनल फार्मूला बाहर करि पाउछे इट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट इट इज द मोस्ट एसेंशियल ये गोटे कॉज सेकंड कॉज कोन अरे भाई फंडामेंटल राइट काहे कहउछे हमको फंडामेंटल राइट के देइछे हु गेव द फंडामेंटल राइट कॉन्स्टिट्यूशन हमको कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करि हम फंडामेंटल राइट अब कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ इज ए फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड that is why it is called fundamental rights
ओके तो कौन कहला कि कहीं कह जाए दे आर एसेंशियल फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल फंडामेंटल राइट खाली तुमको मैटेरियल बेनिफिट दउनी ओके तुम इंडिविजुअल डेवलपमेंट प्रोवाइड करूछ ओके तो डेफिनेटली फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट सेकंड दे आर ओनली सेट ऑफ राइट्स guaranteed by the constitution they are only set of rights guaranteed by the constitution खाली गोटे सेट ऑफ फंडामेंटल राइट देछि only set of rights guaranteed by the constitution आउ किछि सेट ऑफ राइट्स नहीं आउ किछि सेट ऑफ राइट नहीं wrong ओके DPSP is also rights तमर जेमति फंडामेंटल राइट्स DPSP is also rights there is a relation between fundamental right and DPSP also okay so second statement incorrect third statement they are sacrosanct and permanent केमिति fundamental right are not sacrosanct okay fundamental right is not sacrosanct article 19 subclause 1 रे तमर freedom of speech expression कथा etc कहला article 19 subclause 2 रे तर restriction देछि तान यदि restriction न थांदा ताले sacrosanct आइताना permanent आइताना केई ताकू टच करि पा न थांदे but it is not permanent parliament has the power to amend the fundamental right can take away your fundamental right but without destroying the basic structure केशवानंद भारती केस रे कोन कहले कि जब parliament पाखर power अछि parliament can do anything with the fundamental right no problem but without destroying the basic structure रे टच करि परिबो नाही okay तो third statement incorrect it is they are sacrosanct and permanent not permanent okay तो आंसर एटी को हबो C will be the correct answer कार किछि डाउट B हबो नै C हबो B हेतले 1 2 3 नो ओके से पचारि करेक्ट पचारि बुझियला C will be the correct answer only one कार किछि डाउट जदि पचारि परिबे गिविंग टाइम 6 नंबर क्वेश्चन गला any doubt you can ask me next 7 number okay 7 number with reference to DPSP or directive principle of state policy in Indian constitution consider the following statement DPSP ऊपर question अछि DPSP कौन it is the direction given by the constitution to the state to keep in mind while formulating the laws okay it is called novel feature of Indian constitution किए कहले Dr. Ambedkar okay Granville Austin कौन कहले fundamental right and DPSP as the conscience of the constitution बहुत सारा कथा कहि जने DPSP को नै कि ओके DPSP रो कैरेक्टरिस्टिक्स कोन नेचर्स कोन ओके केमिति क्लासिफाई कराइ छै ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन कोन से क्लासिफिकेशन करनी को अमेंडमेंट है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड DPSP हाउ DPSP कॉन्फ्लिक्ट विथ द कोन फंडामेंटल राइट ए गुडा सब तमे जानि पाइ ओके को दे जी 7 नंबर आंसर को हो their recommendation only to legislative branch of the government second they help the court in determining the constitutional validity of the law D जो माने कहउछ wrong आउ थरे आंसर करो D जो माने कहउछ wrong neither one nor two कहउछ ने wrong आंसर कहबो करंतु take your time 1 minute time नै कि करंतु 7 नंबर मन रखे मु तुम कहली कि जे DPSP कोन DPSP गोटे डायरेक्शन किए दैछि कॉन्स्टिट्यूशन कहा को दैछि स्टेट को आ स्टेट रो आर्टिकल कोते दैछि 36 रे आर्टिकल 12 रे फंडामेंटल राइट रो स्टेट कथा कहिछि से स्टेट सेम दिन आर्टिकल 36 रे कहिछि त माने कोन पॉपुलेशन रहइबो टेरिटरी रहइबो गवर्नमेंट रहइबो आ सॉवरेनिटी रहइबो आ गवर्नमेंट रे किए लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव मन रखिबो जुडिशियरी इज नॉट ए पार्ट ऑफ द नॉट ए पार्ट ऑफ स्टेट judiciary is not a part of state under article 12 or 36 रे judiciary state नहीं but the administration of justice is a part of state मन रखिबो statement judiciary is not a part of state but administration of justice is a part से दैछि only to legislative branch the wrong of both legislative and executive branch the first wrong second they help with the courts in examining or determining the constitutional validity on record DPSP may be DPSP is unconstitutional non justiciable in nature no doubt but it helps the court in determining the constitutional validity of law
जेतेबेले कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी केस कथा आसीबो तो डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट कहा द्वारा देखि परिबो डीपीएसपी द्वारा देखि परिबो तो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट तो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट से पचारि करेक्ट स्टेटमेंट कोटा तो डेफिनेटली बी विल बी द करेक्ट आंसर हां बी देइछन समस्त बढ़िया बढ़िया वेरी गुड नेक्स्ट ओके क्वेश्चन ए क्वेश्चन ने करा आर्टिकल 358 एंड 359 त माने पढिथिबो आर्टिकल 358 एंड 359 इमरजेंसी चैप्टर रे एटलीस्ट तो पढिथिबो इमरजेंसी चैप्टर रे कोन दैछि if the president of India exercise his power as provided under article 359 of the constitution कोन को आंसर आर्टिकल 359 of the Indian constitution ऊपर क्वेश्चन अछि त माने इमरजेंसी चैप्टर रे पढिथिबो कोन को आंसर बंधु C the president is empowered to suspend the enforcement of some fundamental right okay correct अछि समस्त C will be the correct answer सुनो आर्टिकल 358 रे कोन कहूची जदि तमरा नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर होची को ग्राउंड रे ना वार एक्सटर्नल एग्रेशन ने ताहाले ताहाले ऑटोमेटिकली मन रखो टर्म ऑटोमेटिकली आर्टिकल 19 सस्पेंडेड है कोन से ये दरकार नहीं किनु आर्टिकल 359 कोन कहूची ना जेतेबेले इमरजेंसी डिक्लेयर होची नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर होची ताहाले सब आर्टिकल थियोरेटिकली एक्टिव इवन 2021 को तुम हटै परिबनी जोटा 44th अमेंडमेंट 1978 रे कहला ओके कौन से इमरजेंसी डिक्लेयर हो ना 2021 को तुम कई छड़े नहीं पारे 44th अमेंडमेंट रे ऐड है बुझियो छी तो से कोन कहूची जति तमर आर्टिकल 359 ने नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर हे जाला तो सेते बेले थियोरेटिकली ऑल फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल विथ बट ओनली एनफोर्समेंट तमर सस्पेंडेड है जोटा प्रेसिडेंट ऑर्डर रे आसीबो ओके द फंडामेंटल राइट को गुडा सस्पेंडेड हबो त एनफोर्समेंट को गुडा सस्पेंडेड हबो थियोरेटिकली फंडामेंटल राइट इज अवेलेबल विथ यू बट द सस्पेंशन कोउटा हबो ओनली एनफोर्समेंट हबो okay the answer will be definitely C the president is empowered to suspend the enforcement of some fundamental right माने theoretically fundamental right तुम पाखर अछि but practically for the enforcement you cannot approach to supreme court or high court okay बढ़िया 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 आंसर कोई पहले बढ़िया अछि नेक्स्ट 9 नंबर आंसर करूँ 9 number consider the following statement with respect to the freedom of religion enshrined in the constitution freedom of religion ऊपर क्वेश्चन अछि freedom of religion कम समस्त पूर्व आंसर करेक्ट थिला कोन 9 नंबर क्वेश्चन नंबर देके आंसर दियंतु नंबर देकी देछि consider the following statement with respect to freedom of religion enshrined in the constitution Kondala first statement it includes the freedom to not follow any religion second statement dala it bars all religion conversion मन रखिबो आपण चाहिले भी फ्रीडम ऑफ रिलीजन आपण कोन से रिलीजन फॉलो करि परिबे करेक्ट अछि स्टेटमेंट ओके नेक्स्ट कहछि इट बार्स ऑल रिलीजन कन्वर्शन कोन सब रिलीजन कन्वर्शन बैन करिनी इट इज ओनली बैन फोर्सफुल कन्वर्शन आपण करि परिबे नाही तो से पचारि करेक्ट तो डेफिनेटली आंसर विल बी ए ओके फोर्सफुल कन्वर्शन बैन किंतु सब कन्वर्शन तुम इच्छा रे तुम कन्वर्ट हेबे देयर इज नो बार ओके कोन से बार नाही बढ़िया नेक्स्ट 10 नंबर आंसर कौन हबो 10 नंबर which of the following are the factor responsible for bulkiness of the Indian constitution okay it is the bulkiness of Indian lengthiest written constitution को जाए
एलिफेंटासाइज भी क्रिटिसाइज कराई इवन इफ तुमको कहै कि एम्बलम दिया बिकॉज एलिफेंटासाइज के कॉन्स्टिट्यूशन सील भी सेमती करा जायछि बहुत सारा क्रिटिसिज्म मिलछि किंतु काहे के एमती बल्किएस्ट हला काहे के व्हाट आर द कॉज व्हाट आर द फैक्टर दैट आर रेस्पोंसिबल फॉर बल्किनेस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मन रखियो देयर आर 4 to 5 factors that are responsible for the bulkiness of Indian constitution. First one is the geographical diversity. Okay, India is a subcontinental size, different race language okay, linguistic diversity, race diversity, different diversity लोक कौन होचंदी जे इंडिया रे रहउचंदी तो सेति पई ह्यूज जियोग्राफिकल एक्सटेंट एंड डाइवर्सिटी करेक्ट अछि नेक्स्ट होची डोमिनेंस ऑफ लीगल लुमिनरीज इट इज आल्सो करेक्ट ओके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रे जो माने थिले ऑल मैक्सिमम पीपल आर फ्रॉम द लॉ बैकग्राउंड के बैरिस्टर थिले एडवोकेट थिले एक्सेट्रा एक्सेट्रा ओके आ तांको लैंग्वेज स्टॉर्म बुझिया लागि कोन करा होतला जेतले से जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखुतले टू चेरिश द नोबेल आइडियल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भाई नोबेल आइडिया कोन चेरिश कोन ताकू तो एक्सप्लेन करा लोको केमिति बुझिबे बुझिउछि तो ए दिनस को एक्सप्लेन करियारो भी किछि कहैछि ना लेंथीएस्ट इज तापर सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर बोथ सेंटर एंड द स्टेट्स ओके इंडिया रे सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन सेंटर रे जोटा अछि स्टेट रे भी से जम्मू कश्मीर रो अलग आतिला 2019 मसिया रो चेंज ओके तो डेफिनेटली तुम अदर कॉन्स्टिट्यूशन को जीव डिफरेंट अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन यूएस रे जीव 2 कॉन्स्टिट्यूशन बट इंडिया रे सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन आउ कोन ना हिस्टोरिकल फैक्टर आल्सो कोड हमें मैक्सिमम प्रोविजन आनिचो ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 अब भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 इटसेल्फ बल्किएस्ट सेते बेले तो म्यांमार इंडिया को बर्मा इंडिया को मिसै की तैयारी करा जायतला ओके तो ऑब्वियसली सिविल आ सबुट इंपोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन है जे गवर्नेंस पे बहुत सारा कॉन्स्टिट्यूशन आपण पढ़ी के आसबे कॉन्स्टिट्यूशन रे ओनली गवर्नेंस रिलेटेड लिखा है बट एडमिनिस्ट्रेशन कथा कोनोसी कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्ट करिना केही पार्ट करना बट इंडिया तक कोन करछ एडमिनिस्ट्रेशन केमिति सिविल सर्विस काम करिवो यूपीएससी केमिति काम करिवो डिफरेंट बॉडीज ऊपर काम करिवो तो डेफिनेटली इट इज लेंथीएस्ट हो तो दीज आर द फैक्टर दैट रेस्पोंसिबल फॉर द बल्किनेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो आंसर कोन हो आंसर इट इज डेफिनेटली ए हबो बढ़िया समस्त आंसर दैछन नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन 11 नंबर कौन the Indian Council Act of 1909 provided for which of the following provision okay the Indian Council Act of 1909 provided for which of the following provision in 1909 को कौन को जाए the Morley Minto reforms को जाए कौन आंसर there is non official majority in central legislature 11 नंबर आंसर कौन हो एसोसिएशन ऑफ इंडियंस विद द एग्जीक्यूटिव काउंसिल सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर एंग्लो इंडियंस कौन आंसर तो फर्स्ट रॉन्ग सेकंड करेक्ट अछि सेपरेट इलेक्टोरेट एंग्लो इंडियंस को दिया जाय नथला मुस्लिम कम्युनिटी के दिया तो टू कोडी अछि भाई देखो करेक्ट पचारि छी तो 2 कोडी सी विल बी द करेक्ट आंसर बढ़िया हाँ सी विल बी द करेक्ट आंसर देखो एतरे सब दिन गुड़ा तो दे देछि पढ़ी दबो ओके देछि को इंडियन काउंसिल एक्ट रे कोन को इफेक्टिव थिला ओके कोन को इफेक्टिव थिला लिमिटेड इंक्रीज कराइतला इलेक्शन वायरस लेजिस्लेटिव काउंसिल कराइतला इलेक्टोरल प्रिंसिपल ग्राउंड रे कराइतला तापर को कोन होइतला सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाइतला सेपरेट इलेक्टोरेट कराइतला ऑफिशियल मेजॉरिटी भी दिया जाइतला सेक्रेटरी स्टेट सेक्रेटरी 2 जन को अपॉइंट कराइतला 2 जन को बॉम्बे मद्रास रु तो दिन से गुडा टिके देखि देबे एक्ट रु पढ़ी कि जिबे तो डेफिनेटली क्वेश्चन आसीबो एक्ट को पढ़ी कि भल से जिबे तो प्रीलिम्स रे क्वेश्चन आसीबार मैक्सिमम चांसेस अछि नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर आंसर कौन the which of the following supreme court case is related to the dispute conflict between fundamental and DPSP of the states DPSP of fundamental right भितरे जो conflict होतला ओके ता भितरे को केस रिलेटेड IR kilo case 2007 it is not related to DPSP it is related to 9th schedule of Indian constitution सुप्रीम कोर्ट कहले कि जे सब लॉ को नै कि 9th schedule पके देन ओके देयर इज नो ब्लैंकेट इम्यूनिटी टू द 9th schedule
okay, and April 24 1973 पर जो law पकैछ they are open to judicial review if your fundamental right is violated IR की law case रे कहला okay तमाने there is no कौन blanket immunity to the 9th schedule को case रे कहला IR की law case next Goloknath case it is not related to the fundament sorry कौन 1967 1967 okay it is related to what तुम्हारा DPSP Menka Gandhi case 1980 it is the principle of natural justice that is related to due process of law and procedure established by law next Minerva Mills case कहला कि balance between fundamental right and DPSP fundamental right and DPSP balance between fundamental right and DPSP जोटा को कहंती जे doctrine of harmonious construction okay 2-4 answer will be B okay समस्त correct है बढ़िया ठीक है next 13 number which among the following is a fundamental duty under the Constitution of India ए वाला टाइप रो क्वेश्चन ओपीएस रे आसुछ ओके इजी क्वेश्चन भी गोटे आसुछ इजी क्वेश्चन भूल न होबा दरकार इजी क्वेश्चन बेले बेले गोटे आसी जाउछ which among the following is a fundamental duty there are 11 fundamental duties right now original तुम देखियो 42nd amendment रे originally constitution कौन सी fundamental duty न fundamental duty and rights are there inseparable and correlated से माने कई काट फॉलो गाई परिबे ओके तम बोले सब बुझे original constitution कौन सी list of fundamental duty न थिला it is added through 42nd amendment 1976 and 42nd amendment रे 10 टा fundamental duty add हला and later phase 86th amendment 2002 रे another fundamental duty added 51A okay तो पचार जी कोडा नो to support bona fide society नहीं to keep street road etc दर नहीं to defend the country हाँ to defend the country 51AD to pay taxes okay शरण सिंह कही थे लेकिन ताको मानी नथिले तो आंसर कोन हबो 13 नंबर C 13C ओके मन रखिबो सब लिस्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटी की नेक्स्ट कोन हबो according to the constitution which among the following categories a person would not be eligible to become citizen of India ପାଇଁ କିଏ eligible नुह citizen of India ପାଇଁ citizenship act 1955 रे देछि constitution रे कोनोसी जगह रे डिफाइन हैनी जे कोनोसी वे citizenship पाइबो कोन हबो ओके इट इज द citizenship act of 1955 जोतरे कि डिफाइन करिछि आ टाइम लाइन सब देछि जे एई टाइम पीरियड रे सिटीजन बर्थ रजिस्ट्रेशन नेचुरलाइजेशन एक्वायर्ड टेरिटरी एगुडा सब कोउतरे देछि ना citizenship act 1955 ओके तो आंसर को 14 नंबर आंसर कोन हबो नॉट पचारिछि who is a resident India for 5 year immediately 5 year नहीं अच्छा नॉट पचारछि तो फर्स्ट आंसर भी मिली जाइछि हम देखिबा तापरे who migrated to Pakistan from India after March एतिकी but later returned by correct अछि articles तो प्रोवाइड करिछि whose parents undivided India migrated to Pakistan before एटा भी करेक्ट अछि whose grandparents were born in undivided एटा भी करेक्ट अछि तो डेफिनेटली नॉट पचारिछि तो नॉट एला कोन हबो आंसर ए 14 नंबर आंसर ए हबो 14 आंसर ए 14 आंसर ए it is 7 years exactly it is 7 years okay next 15 number question कोन हबो which of the following writs issued by higher court to lower courts in transfer case pending with the latter writ
ओके ट्रांसफर केस कथा कहि ट्रांसफर ऑफ केस कथा कहि कम आंसर obvious corpus माने को टू हैव बॉडी ऑफ ओके इट इज आल्सो कॉल्ड ऑफ द बुलवर्क ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी को आजे ओके कहा को इलीगली डिटेन कराई छि देन सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट कैन इशू obvious corpus to produce the person before the court बुझौ छि तो obvious corpus तो नहीं नहीं एदरे mandamus माने होछि वी कमांड कहा को पब्लिक अथॉरिटी को वी कमांड करियो प्राइवेट अथॉरिटी नुह prohibition habeas corpus mandamus prohibition होछु टू डिसकंटिन्यू हियरिंग को डिसकंटिन्यू करिवो पर सर्कुलर रे कोन करे टू सर्टिफाई और ट्रांसफर तो डेफिनेटली आंसर विल बी 15b विल बी द करेक्ट को वारंट नाही को वारंट बाय व्हाट अथॉरिटी की पचारे भाई को अथॉरिटी रे पचारुछु बाय व्हाट अथॉरिटी तो 15 डेफिनेटली b will be the correct answer B will be the correct answer. Next. Sorry. Okay, जोडी बुझी परबन ते कांसेप्टल पचार दबो देई छी कि consider the following statements regarding reorganization of states तमे जानि छ आफ्टर 1953 परे the Indian political map undergo massive change okay due to language movement बहुत सारा movement the state reorganization act असला देन ता पूर्वरु तमरो फैजल अली कमिटी जेबीपी कमिटी एसके धर कमिटी एसके धर जेबीपी एंड फैजल अली कमिटी तो डिफरेंट कमिटी आसला तार रिकमेंडेशन आसला जे वन नेशन सॉरी वन स्टेट वन लैंग्वेज रही परिबनी एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस रहिबा दरकार इकोनॉमिक कंडीशन देखिबा दरकार ओके तो ए दिन सब गुडा गुटिके दया करी पढिबे किए को कमिटी को रिकमेंडेशन देथिला The State Reorganization Commission of 1953 accepted the theory of one language one state accepting कर नथिले तापर गुजरात was the first state to be created linguistic basis रे देखिबो after independence it is andhra 1953 okay linguistic यदि before देखिबो 1936 it is the odisha so definitely answer D हो okay answer D एतर किसी बुझेबार नै आपण माने किनो मन रखिबे कमिटी रिकमेंडेशन एसके धार कमिटी देन जेबीपी कमिटी देन फैजल अली कमिटी ए कमिटी रिकमेंडेशन दया करी मन रखिबे तादरे मन रखिबे सीक्वेंस को सीक्वेंस रे को स्टेट ऐड हेतिला ओके पचार दबो 24 25 26 नंबर स्टेट ओके न चारिटा स्टेट दे दबो पचारिबो कि अरेंज करो को अमेंडमेंट परे कहा परे के ऐड हेतिला ओके सिक्किम केबे ऐड हेतिला गोवा केबे ऐड हेतिला 1987 1976 ए दिन सब गुडा गुटिके मन सॉरी 75 मन रखिबो किए कहा पर ऐड हेतिला 2000 रे पचार दबो केतेटा स्टेट ऐड हेतिले और तब क्रिएटेड हेतिले तो ए टाइप रो क्वेश्चन तमरा पचारी पारे ओके नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन आंसर को हो 17 नंबर with reference to the regulating act of 1773 consider the following statement regulating act 1773 ओके जेतले ईस्ट इंडिया कंपनी रो पावर धीरे धीरे बढ़ी चलीतला करप्शन भी बहुत होतला ओके तो सेते बेले ताकू रेगुलेटिंग एक्ट करा जायतला रेगुलेटिंग एक्ट करा जाय कि कोन चेंजेस करा जायतला तापरे क्वेश्चन कोन 17 नंबर कोंतु it recognized the political and administrative function of East India Company it laid down the foundation of the central administration in India 17 नंबर कोन हो recognize political company of directors and board of control okay court of director and board of control appointed kara jaitila okay तो definitely divide kara jaitila it laid the foundation and the central administration okay foundation central administration रे कोन करा जाइतला ऐड करा जाइतला त माने को पावर को कंट्रोल करा होतला का द्वारा ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा तो डेफिनेटली आंसर विल बी सी 17 नंबर आंसर विल बी सी नेक्स्ट 18 नंबर आंसर को हबो को 18 नंबर which of the following statement is correct with reference to right to property
Right to property original is a fundamental right, but it become a legal right. Legal right कर दिया गला को amendment रे 44th amendment 1978 रे 44th amendment, and right now it is a legal right under article 300A, okay, part 12 of Indian Constitution, and it is the most controversial article in Indian Constitution till now. जब तुम कहबो कि आर्टिकल 21 को सुप्रीम कोर्ट पूरा एक्सपांड करिछि, ओके, इंटरप्रिट करी करी, तो सही बड़ा आर्टिकल 31 इज द मोस्ट कंट्रोवर्शियल आर्टिकल, ए पर्यंत कंट्रोवर्शियल आर्टिकल बेच को आंसर कौन 18 नंबर 18 नंबर देखी जस्ट अ सेकंड लेट मी which of the following statement is correct with reference to right to property? That it is a legal right, correct, it is a legal right. 300A part 12 of Indian Constitution. It can be curtailed by ordinary law of the parliament. Ordinary law of the parliament, because it is a legal right, so that can be curtailed by ordinary law of parliament. In case of violation, the aggrieved person directly move to Supreme Court. No, directly jai paribani, district court ru jiba padibo, because it is a legal right. The third statement incorrect. The answer will be 1 and 2. Okay, that is the difference between fundamental right and legal right. Fundamental right, directly you can approach to Supreme Court, High Court under article 32 and 226. But legal right, you have to go through hierarchy of the courts. आगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को जाय पड़िबो, तापर हाई कोर्ट, तापर सुप्रीम कोर्ट तुम जाय पारो, ओके, हायरार्की ऑफ कोर्ट रे तुमको जीवा को पड़िबो, तो डेफिनेटली आंसर विल बी ए. चलो नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पर क्वेश्चन अछि करो 19 नंबर. Which of the following principles were included in the objective resolution passed in the Constituent Assembly? December 13, 1946. Okay, objective resolution is passed on January 22, 1947. It is accepted. का द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू. Objective resolution. हाँ परिडा पिक्सेल सरनाक रणती गेम बाबा को आंसर को चलो 19 नंबर. Powers and authority of independent India and its constitution shall flow from the people. Okay, authority lies with the people. Correct statement. Minority and other backward classes will be provided adequate safeguards. Safeguard be provide करा जीवो. Correct statement. Okay, minority को safeguard दिया जीवो. Third, India will make full and willing contribution to the promotion of world peace. Article 51 ने भी तमर provide करे छी. Okay, DPSP रे भी देछि. तो आंसर will be मन रखिबो. At least constitutional development को भल से पढ़ी की जीवो, तार provision गुडा भल से पढ़ी की जीवो. तादर भी स्टेटमेंट रो क्वेश्चन आसी पर ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ऊपर क्वेश्चन आसी छी. ओके, एलिमिनेशन मेथड रे भी ही जाउतला, बहुत सारा जो क्वेश्चन आसी छी सेटा एलिमिनेशन मेथड रे भी ही जाउतला. ओके, देखिबो ओपीएस रे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिबो, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ऊपर क्वेश्चन आसी छी. नेक्स्ट क्वेश्चन जीबा. ओके, बेसी टाइम जीवो ने. नेक्स्ट क्वेश्चन आई थिंक 10 to 15 मिनिट भीतर में सारी दबा. 10 to भीतर. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द फेडरल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? फेडरल माने कौन? फेडरेशन माने कौन? फेडरेशन गोटे टर्म रो आछि त कोंदी फोइडस माने एग्रीमेंट. आ एग्रीमेंट दी प्रकार, गोटे होची होल्डिंग टुगेदर, अनदर कमिंग टुगेदर कोन हो ना, डिफरेंट स्टेट दे कम टुगेदर, से माने आसी की कोन करिवे ना गोटे फेडरेशन बनेबे. फेडरेशन, ओके, दैट इज कॉल्ड कमिंग टुगेदर. जोटा यूएस रो होल्डिंग टुगेदर रे कोन ना, गोटे ये को डिवाइड करिकि से माने एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस पई कोन करिवे, डिवाइड करिवे. ओके, दैट इज कॉल्ड होल्डिंग टुगेदर. जोटा इंडिया कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म, होल्डिंग टुगेदर एनसीईआरटी पढिथिले बुझिथिबे जिंस. ओके, यूएस रो ता भीतर भी कोन कराई छी, जो वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर कराई छी. वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर. ओके, तो कोन कहला
division of power, written constitution, supremacy of constitution, rigidity of constitution, independent judiciary, bicameralism, all are the federal feature. All are federal feature. A Indian federation is not agreement. Even if कौन सी जगह रे इंडिया गोटे फेडरेशन बेल ना टर्म भी मेंशन है आर्टिकल 1 पे कहूची यूनियन ऑफ स्टेट्स मन रखिबो कौन सी जगह रे फेडरेशन टर्म यूज हैनी इंडिया नॉर्मल टाइम रे फेडरेशन भलिया काम करे बट एक्सेप्शनल टाइम रे तमरो कोन हो कि इमरजेंसी टाइम रे यूनिटरी हो जाए दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड क्वासी फेडरल केस यू हेयर कहले बार्गेनिंग फेडरलिज्म कहला मोरिस जोन्स कहले कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहले ग्रानविल ऑस्टिन फेडरेशन विथ सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी कहले आइवर जेनिंग्स एक्सेसिव फेडरलिज्म और एक्सट्रीमली फेडरलिज्म के कहले पॉल अपलबी बहुत सारा थिंकर्स बहुत सारा क्रिटिसिज्म देछन तो आंसर को 1 2 3 4 5 तो डी विल बी द करेक्ट आंसर डी विल बी द करेक्ट आंसर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन गांधीयन फिलोसफी पचार जो गांधीयन प्रिंसिपल पचारिछ आ भीतर कोउटा गांधीयन प्रिंसिपल which of the following directive principle is based on the Gandhian ideology मन रखिबो DPSP is not classified by the constitution constitution कोनोसी जगह क्लासिफाई करेनि कि जे DPSP एही भले आबा दरकार ओके DPSP को आमे क्लासिफाई करछे अकॉर्डिंग टू द आइडियल्स रिफ्लेक्टिंग द आर्टिकल्स जो आर्टिकल जो आइडिया रिफ्लेक्ट करि जामे ता तीन भाग रे विभक्त कर दै छै सोशलिस्ट प्रिंसिपल गांधीयन प्रिंसिपल एंड लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल ओके से पचारि छै आ भीतर कोउटा which of the following directive principle is based on the Gandhian ideology Gandhian ideology okay to promote cottage industry 43 to promote cottage industry 43 to organize agriculture animal husbandry 47 47 next to raise the level of nutrition sir eta 48 sorry 48 to organize agriculture animal husbandry 48 ये 47 ये 47 तो ये लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल ये सोशलिस्ट प्रिंसिपल ये गांधीयन प्रिंसिपल तो आंसर विल बी ए ओके आर्टिकल 43 को थरे गांधीयन प्रिंसिपल ले कोन कोन को आर्टिकल अछि लिबरल इंटेलेक्चुअल ले कोटा अछि सोशलिस्ट रे कोटा अछि टिके दया करी कि मन रखिबो आ कोटा को थरे ऐड भी हेतला मन रखिबो गांधीयन प्रिंसिपल ले कोन 40 43 आ कोन 43 43 P 46 47 48 okay these are the Gandhian principle these are the Gandhian principle liberal intellectual 44 45 44 45 48 48 ए 49 50 51 socialist 39 38 39A 41 42 41 42 next 43A and 47 so these are the principle okay good morning मन रखिबो को प्रिंसिपल ले आ कोउटा कोउटा ऐड आइछि कोउटा ऐड आइछि मन रखिबो कोउटा ऐड आइछि 44th रे को ऐड आइछि 44th रे 38 लास्ट पोर्शन रिड्यूस इनइक्वालिटीज 42nd रे 39A 43A 48A okay these are the added through 42nd 97th 97 43B 2011 okay कोउटा कोउतरे ऐड आइछि भी दया करी के मन रखियो okay next question को जिबा right to form cooperative society right to form cooperative society right to form cooperative society term cooperative society केबे आडला 97th constitution amendment 2011 243 ZS2 243 ZT और ओरिजिनली भी राधे राधे ओरिजिनली भी 19 सब क्लॉज 1C रे भी थिला 19 sub clause 1C the right to form cooperative society is a fundamental right legal right constitutional right or natural right कौन आंसर 21 नंबर कौन हबो हां it is a fundamental right को आर्टिकल 19 sub clause 1C रे दैछि
19 सब क्लोज 1 सी रे देछि ओके तो फंडामेंटल राइट इट इज अ फंडामेंटल राइट चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 23 according to the preamble of the constitution as adopted in the constituent assembly से पचार as adopted by the constituent assembly ता माने constituent assembly रे जेमती adopt करा जायतिला वॉइस क्लियर अछि बे एम ऑडिबल एबे ऑडिबल चार सरी जाइतो ओके लाइव रे सब कुछ सरे बेले बेले एबे वॉइस क्लियर अछि ऑडिबल एम ऑडिबल टू एवरीवन एबे साउंड अछि चार सरी गला भाई एबे एबे वॉइस क्लियर अछि ऑडिबल एम ऑडिबल टू एवरीवन ओके ठीक अछि अच्छा सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक सॉवरेन डेमोक्रेटिक आ 42nd रे ऐड हैला कि कोन सोशलिस्ट सेकुलर इंटीग्रिटी सोशलिस्ट सेकुलर इंटीग्रिटी sovereign democratic so sovereign 24 will be definitely B will be the correct answer B will be the 23 number B will be the correct answer okay B will be the correct answer ठीक है next duties ऊपर क्वेश्चन है duties ऊपर क्वेश्चन करा with reference to the provision about fundamental duties in Indian constitution consider the following statement duties ऊपर क्वेश्चन है 24 duties nature of the duty ऊपर क्वेश्चन है they included both civic duties and moral duties okay fundamental duty रे दी प्रकार ड्यूटी अछि civic duty moral duty बहुत सारे ड्यूटीज अछि तम मोरल अनुसार करिवो आ सिविक ड्यूटी अछि लॉ ऑफ द पार्लियामेंट द्वारा ओके तो डेफिनेटली करेक्ट अछि एटा पार्लियामेंट कैन प्रोवाइड फॉर इंपोजिशन ऑफ एप्रोप्रिएट पेनल्टी फॉर द फेल्युअर ऑफ एनी फुल हां करेक्ट ओके बहुत सारा देखो तमे माने जानिचो जे फंडामेंटल ड्यूटीज आर नॉन जस्टिसेबल they cannot be enforced the court of law but can be enforceable by court of parliament sorry law of parliament law बने के enforce देखो कोई चीज नॉन तमे जदी नेशनल फ्लैग को रेस्पेक्ट न करबो कोन हे जबो नॉन जस्टिसेबल कोर्ट को जाई परबनी बट पार्लियामेंट तो लॉ बनै छै ना जदी तमे नेशनल फ्लैग को नेशनल एंथम को रेस्पेक्ट न दउछो देन झाड़पड़ा जल जीवो तो डेफिनेटली कहबो कि तो डेफिनेटली हबो ओके 1919 ने बर्मा कमिटी एसी सॉरी बर्मा कमिटी रे कोन करतले बहुत सारा अछि जेमति कि लॉ द्वारा तमे करि परबो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 UAPA 1967 okay environment protection act 1986 water pollution act 1974 air pollution act 1981 तो डिफरेंट एक्ट द्वारा अछि कि बर्मा कमिटी रे रिकमेंडेशन है बहुत एक्ट अछि तो एक्ट द्वारा भी तमे कोन करि परिबो दे डू नॉट अप्लाई फॉरेनर्स कोनोसी फॉरेनर्स को से माने अप्लाई करंती नै दे डू नॉट अप्लाई टू द फॉरेनर्स 24 okay do not foreigners mano paine the correct pacharti the D will be the correct answer D will be the correct answer okay D will be the correct answer कार किछि डाउट अछि कार किछि डाउट any doubt you can ask me
next with reference to article 12 of Indian Constitution कहली state ର definition कौन करइबो population माने community territory गोटे territorial extent then government and sovereignty जहाँ पाखर अछि सार सी होछि state तो parliament legislature union executive state municipality तो definitely answer होबो D 25D D will be the correct answer मन रखिबो judiciary एई दुटा concept मन रखिबो judiciary is not a part of state but administration of justice is a part of state BCCI is not a part of state that is why you cannot file RTI to the BCCI okay BCCI is not a part of state मन रखिबो एई आर्टिकल 12 रो डेफिनेशन जो फंडामेंटल राइट रे देछि कोन ना स्टेट पई सेम डेफिनेशन डीपीएसपी पई स्टेट रो चलो नेक्स्ट आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन को ऑलरेडी कहि छले न एटा लास्ट क्वेश्चन ट्रस्टी माने जिबे जोटा गवर्नमेंट पई काम करथबे ट्रस्टी माने जिबे बट जो माने गवर्नमेंट पई काम करथबे और गवर्नमेंट थारु एड नउथबे फाइनेंशियल सपोर्ट नउथबे सेगुडा जिबे लास्ट क्वेश्चन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आप करेक्ट पचारिच the term federation has nowhere mentioned in the constitution correct federation term कोडी मेंशन नहीं no state has right to secede from the federation कोनोसी because आम फेडरेशन एग्रीमेंट नुह ओके तो आंसर कौन हम आंसर बोथ आर करेक्ट ओके तो आमर कोनोसी जगह टर्म फेडरेशन मेंशन नहीं बुझियला आउ कोन फेडरेशन आम फेडरेशन एग्रीमेंट खाली भलिया नुह जे जते चाहि पळेबो ओके आमर होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म ओके नो स्टेट हैज द राइट टू secede फ्रॉम द फेडरेशन का पाखरे नहीं judiciary is not a part of state but मन रखिबो administration of judiciary under article 12 रच judiciary is not part ओके पीएम बॉक्स से जाई भलसे पढो आर्टिकल 12 को पीएम बॉक्स रु भलसे पढो से लेखा आइतबो तादर लेखा थिबो कि जे जुडिशियरी इज नॉट पार्ट बीसीसीआई इज नॉट पार्ट डिफरेंट को कोऑपरेटिव गुडा पार्ट हेई परिबो कोडा हेई परिबो ने पूरा पीएम बॉक्स रे डिटेल्स रे देछि दया कर जाई टिके पढिबे ओके तो हाजी पायति के नेक्स्ट काली तमर क्लास तो रहिबो आ मोर क्लास पुनी वेडनेसडे जाबो तो हमें पुणी देखा नुआ क्वेश्चन सहित नुआ कॉन्सेप्ट डिस्कशन करबा तो डेफिनेटली आउ किछि यदि करिया पड़िबो अपन डेफिनेटली अपन कमेंट सेक्शन में जणैबे आउ डेफिनेटली कोन करिवे कि लाइक करिवे सेशन को आउ कोन करिवे जे कोन करिवे कोन करिवे सब्सक्राइब करिवे ओके चलो थैंक यू बाय बाय गॉड ब्लेस यू ऑल।